विद्यार्थियों, 10वीं कक्षा के हिंदी क्लासों में तुम लोगों को मेरा पूरा स्वागत। आज हम आलोचना कर जा रहे हैं कि तुम लोगों की पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 नीलकंठ नामक पाठ को। इसका लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। पाठ में जाने से पहले लेखक के बारे में जाना चाहिए। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি লেখকৰ পৰিচয় পঢ়াইছোঁ চাবা। सन 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। महादेवी वर्मार की হৈছিল उत्तर प्रदेशर फर्रुखाबादत 1907 सनत होलीर दिना जन्म लाभ करिছিল। विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। বিয়াৰ পিছত তেওঁ কিছু সময় বা কিছুদিন তেওঁ কি হৈছিল, বিয়াৰ পিছত তেওঁ কিছুদিন তেওঁ পঢ়াৰ পৰা বাদ দিছিল। তাৰপিছত আকৌ তেওঁ কি কৰিছিল, আৰম্ভ কৰিছিল। ওয়ে मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आए छात्रवृत्ति भी पाए। তেওঁ কি কৰিছিল যে মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সমগ্ৰ প্ৰান্তৰ ভিতৰতে প্ৰথম হৈছিল আৰু ছাত্ৰবৃত্তিও লাভ কৰিছিল। बौद्ध भिक्षु ने बनाना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्य में जुट गए। তেওঁ বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বনাবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীৰ আহ্বানত তেওঁ সামাজিক কাৰ্যত কি হৈ পৰিছিল, জড়িত হৈ পৰিছিল। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार के में जुट गए। যে উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বিদেশলৈ নগৈ নাৰী শিক্ষা প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল, যে নাৰী শিক্ষা কেনেধৰণে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰি বা প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি তাতে জড়িত হৈ পৰিছিল। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। তেওঁ স্বাধীনতা আন্দোলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। महादेवी ने छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में औरों से विभिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। महादेवीয়ে ছায়াবাদী 4জন মুখ্য কবিৰ ভিতৰতে নিজকে আন কেইজনতকৈ বিশিষ্ট স্থান পায়। इनका समस्त काव्य वेदनामय है। তেওঁৰ সকলোবিলাক কাব্য কি আছিল, वेदनामयपूर्ण আছিল। उन्होंने साहित्य के बेजोर गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया। তেখেতে কি কৰিছিল, গোটেই কাব্য বেদনাপূৰ্ণ আছিল আৰু তেখেতে সাহিত্যৰ মিল নোহোৱা গদ্য ৰচনাবোৰৰ পৰাও সমৃদ্ধ লাভ কৰে। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हुआ। जे 1973 কিমানত জন্ম হৈছিল, মৃত্যু হৈছিল 1987 চনৰ 11 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। उन्हें साहित्य अकादमिक एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुस्तकों से सम्मानित किया गया। যে তেখেতে কি কৰিছিল, যে সাহিত্য একাডেমিক আৰু জ্ঞানপীঠ পুৰস্কাৰ সহিতে সকলো প্ৰতিষ্ঠিত পুৰস্কাৰেৰে তেওঁ সন্মানিত হৈছিল। ভাৰত চৰকাৰ ने सन 1956 में उन्हें पद्मभूषण अलंकार से अलंकृत किया था। যে তেখেতক কি কৰিছিল, ভাৰত চৰকাৰে 1956 চনত পদ্মভূষণ অলংকাৰেৰে অলংকৃত কৰিছিল। केवल 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा जैसी बेजोर कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ है निहार, रश्मि, निराजा, संध्यागीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा आयाम और गद्य रचनाएं हैं। अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कोरिया स्मृति की रेखाएं
पथ के साथी मेरा परिवार और चिंतन के क्षण महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। যে এইবিলাক মহাদেৱীৰ কি হৈছে যে মাত্ৰ 8 বছৰ বয়সতে 12 মাছৰ নিচিনা অন্যতম কবিতা ৰচনা কৰিছিল। মহাদেৱীৰ প্ৰমুখ কাব্যকৃতি হ'ল নিশা ৰশ্মি নীৰজা, সন্ধ্যাগীত, দীপশিখা, প্ৰথম আয়াম, অগ্নিৰেখা আয়াম और गद्य रचना होल अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कोरिया, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण महादेवी बर्मार रुचि चित्रकलातो আছে। তেওঁ বনোৱা চিত্ৰ তেওঁৰ বহুতো কৃতিৰ ভিতৰত সংলগ্ন কৰা হৈছে। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियत तक पहुँचने का श्रेय महादेवी जी को है। हिंदी गद्य साहित्य संस्मरण और रेखाचित्र अतीत उत्तमলৈকে আগুৱাই যোৱা श्रेय होल महादेवी वर्मा। उनकी रचनाओं में समाज के शोषित, उपेक्षित व पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणियों के लिए भी इतना ही प्रेम, करुणा व सहिष्णुता दृष्टिगत होती है। যে তেওঁ কি আছিল যে তেওঁৰ ৰচনাবোৰত সমাজৰ শোষিত, উপেক্ষিত আৰু পীড়িত লোকসকলৰ প্ৰতিয়ে নহয় মানুহৰ বাহিৰে প্ৰাণীৰ কাৰণেও মৰম, কৰুণা আৰু সহিষ্ণুতা দৃষ্টিগোচৰ হয়। नीलकंठ नामक प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर के मीठे कब्रे अनुभवों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्माय কি কৰিছে महादेवी वर्माय নিজৰ পোহনীয়া মৰা চৰাই অৰ্থাৎ নীলকণ্ঠৰ তিতা কেহা অনুভৱৰ লেখ প্ৰস্তুত কৰিছে। इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतु के प्रति अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। এই পাঠৰ মাধ্যমেৰে লেখিকাৰ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি যে অত্যন্ত মৰম আৰু সহানুভূতি परिचय দেখা গৈছে। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, इससे यह रेखा चित्र अत्यंत जीवन बन गया है। लेखिकार जीव जंतुर प्रति থকা অন্যান্য স্নেহ আৰু সহানুভূতিৰ পৰিচয় পোৱা যায়। নীলকণ্ঠৰ লগতে তাৰ সকলো লগৰীয়া ৰেয়া ৰূপ, স্বভাৱ, চৰিত্ৰ, ব্যৱহাৰ আৰু কাৰ্যবোৰক লেখিকাই যিদৰে গভীৰতা আৰু সূক্ষ্মতাৰে নিৰীক্ষণ তথা বৰ্ণনা কৰিছে, তাৰ ফল এই ৰেখাচিত্ৰই অত্যন্ত জীৱন্ত হৈ পৰিছে। पाठ से जानने से पहले हम कुछ शब्दार्थ जाना चाहिए। संकीर्ण, सकरा, सुता, मार्जारी, मादा, बिल्ली, बंकिम, केहरा, पक्षी, शाबक, पक्षी के बच्चे, आर्तक, क्रंदन, दर्द, भरी, आवाज, कर्णवेश, कान, सेदना, मुजी, कंजूस, बारहा, बार बार, मद्र, गंभीर, धुति, सम। চাবা এতিয়া আমি পাঠলৈ যাম, তোমালোকে শুনিবা। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचकर मैं लौट रही थी कि सीढ़ियों की और सरगोशे की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। সেইদিনা আলহীগৰাকীক ষ্টেচনলৈ আগবঢ়াই আহি থাকোঁতে চৰাই দোকানৰ ফালে চকু গ'ল আৰু মই গাড়ী চালকক
সেইপিনে যাবলৈ নিৰ্দেশ দিলোঁ। बड़े मियाँ सीरियाले की दुकान के निकट पहुंचने ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। गाड़ीখন চৰাই দোকানৰ ওচৰ পাওঁতে বাটত আহি মালিকে গাড়ী চালকক তাতে ৰ'বলৈ ইংগিত दिले। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरम्भ किया। মই কোনো প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে তেওঁ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। सलाम गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था যে আগৰবাৰ আহোঁতে আপুনি ময়ূৰৰ পোৱালিৰ কথা সুধিছিল। शंकरगढ़ के एक श्रीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लिया है। শংকৰগড়ৰ এজন চিকাৰীয়ে 2টা ময়ূৰৰ পোৱালি ধৰি আনিছে। এক মোৰ হে এক মোৰনী, এটা ময়ূৰ আৰু এটা ময়ূৰণী। आप पाले আপুনি পুহিব পাৰে। मोर के पंजों से दवा बनती है। ময়ূৰৰ ঠেঙেৰে ঔষধ তৈয়াৰ কৰা হয়। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे যে এনেকুৱা মানুহে ময়ূৰ কিনিবলৈ আহে। आखिर मेरे सीने भी तो इंसान का दिल है যে ময়ো এজন মানুহ এনেকুৱা মানে সৰু পোৱালিক কেনেকৈ মাৰিবলৈ দিওঁ। मारने के लिए ऐसी मासूम চিৰিও को कैसे दो যে এনেকুৱা সৰু পোৱালি এটাক মাৰিবলৈ কেনেকৈ দিওঁ। डालने के लिए मैंने कह दिया যে সিহঁতক মই কি কৰিলোঁ অস্বীকাৰ কৰি মই কৈ দিলোঁ गुरुजी ने मगवाया है। गुरुजीয়ে আনিবলৈ দিছে। वैसे ही यह कम वक्त रोजगार ही खराब है যে কি হৈছে এইটোতো এই ব্যৱসায়টোৱে বেয়া। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो बस केवल धर धर मार मार। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। मालिকৰ ভাষণ তুফান মেলৰ কাৰণে নিশ্চিত ষ্টেচন নাছিল। शून्य लाथक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता था যে শুনোতাজনে য'ত মানে শুনাৰ কাৰণে মানে কি কৰিছিল তেওঁ ক'ব লগা হৈছিল যে তেতিয়াই তেওঁ কি কৰিছিল তাতে ৰৈছিল। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा। এই তথ্যৰ পৰা পৰিচিত হোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁক মাজতে ৰাখি সুধিছিলোঁ मोर के बच्चे कहाँ हैं? मयूर पोवाली को। बड़े मियाँ के साथ के संकेत का अनुकरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरी तक पहुँची जे মই কি কৰিলোঁ মালিকৰ হাতৰ সংকেত অনুসৰণ কৰি মই কি কৰিলোঁ মই সেই সৰু পিঞ্জৰাটোলৈ চালোঁ আৰু য'ত চিতৰকে সমান য'ত বুলবুলি চৰাইৰ সমান 2 बच्चे बैठे थे। 2টা পোৱালি বহি আছিল। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी सबक जाली के गोल फ्रेम में किसी जोरे चित्र जैसे लग रहे थे যে পিঞ্জৰাটোৰ এনেকুৱা মানে ফুটাবিলাক ইমান সৰু সৰু আছিল যে পক্ষীহালক যে সেই জালিৰ মাজত জালিৰ সেই ফ্ৰেমৰ মাজত জৰ চিত্ৰ দেখা গৈছিল অৰ্থাৎ যেন সেইবিলাক সিহঁত যেন জীৱিত নাছিল তেনেকুৱা দেখা গৈছিল। मेरी निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। মই নিৰীক্ষণ কৰিলোঁ আৰু মালিকৰ ভাষণ অবিৰাম চলিয়ে আছিল। ईमान कसम गुरुजी श्रीमार ने मुझसे इस बार मोर के जोड़े नगद 30 रुपये मिले हैं। যে কৈছিল
এই ময়ূৰযোৰৰ দাম নগদ 30 টকা। আপোনাৰ বাবেহে ল'লোঁ। बहारा कहा, भाई जरा सोच तो अभी इतने मुँह की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बुरी कीमती हो मागने चला। এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই কি কৰিলোঁ, তেওঁক ক'লোঁ যে এই ময়ূৰযোৰৰ ইমান তাৰমানে যে भाई जरा सोचो, भाई अलग भाबा, अभी इतने मूर के कोई खासियत भी है कि तू इतनी बुरी कीमती मागने चला। जे তুমি এই ময়ূৰযোৰৰ ইমান দাম বিচাৰিছা, কোৱা মুঞ্জি কিয়? কিন্তু এইটো তুমি কিয় কনজুচ হৈছা, কৃপণালী কৰিছা? आपका ख्याल करके অস্ততা পস্ততা কৰ দেনা হি পৰা, যে আপুনি কিবা এটা কৰি তাৰমানে পইচাটো দিয়ক। আপ जो মুনাচিছ সমজে, আপুনি এতিয়া যি ভাবে সেইটোৱে মোক দিয়ক। 38 श्रीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर बस मैंने यह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। जे এনেকুৱা লাগিল যে 30 টকা চিকাৰীৰ নামত আৰু 5 টকা কি কৰিছিলোঁ, মই মালিকৰ নামত দি চৰাইযোৰ ৰাখিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, এই পইচাটো দিছিলোঁ, তেতিয়া সেই সৰু পিঞ্জৰাটো মই গাড়ী কি কৰিছিলোঁ, ভৰাই থৈছিলোঁ। दोनों पक्षी शासकों को सतपतने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। যেতিয়া মই গাড়ীত ভৰাই থৈছিলোঁ পিঞ্জৰাটোত, তেতিয়া কি কৰিছিল, সেই পক্ষীহালে চটফটাবলৈ ধৰিছিল আৰু কি হৈ পৰিছিল, পিঞ্জৰাটোত সজীৱ হৈ উৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ঘৰ পहुँचने पर सब लोग कहने लगे, ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত সকলোৱে ক'বলৈ ধৰিলে, তিতৰহে যে এইটো বুলবুলি মোৰ কক ঠগ লিয়া হে, মোৰ বুলি কৈ কি কৰিছে, তোমাক ঠগাইছে। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठग जाने की बात मेरे सिर जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मूर्ख के क्या मूर्ख के पर लगे हैं, সেইটো পক্ষী হে। যে বহুবাৰ কি হৈ পৰিছিলোঁ, মই ঠগ খোৱাৰ কাৰণে মোৰ মনটো অলপ কি হৈ পৰিছিল, দুৰ্বল হৈছিল। আৰু মই অপ্ৰসন্ন হৈ মই কৈছিলোঁ যে ময়ূৰৰ পোৱালি নহ'ল কিয়, এইটোতো এটা পক্ষীয়ে। सिर दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षी के प्रति मेरे व्यवहार और যত্ন में कुछ विशेषता आ गई। যে এনেকৈ মানে মানুহে কোৱাৰ পিছত মোৰ সেই পক্ষী দুটাৰ ওপৰত এনেকুৱা মৰম দয়া লাগিছিল যে সিহঁতক কি কৰা হৈছিল, সিহঁতৰ প্ৰতি মোৰ ব্যৱহাৰ আৰু যত্ন সামান্য বিশেষতা দেখা গৈছিল। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कतारों में चुट्टू की छोटी छोटी गुलिया और पानी रखा। প্ৰথমে মই লিখা পঢ়া ৰুমৰ ভিতৰতে পিঞ্জৰাটো ৰাখিছিলোঁ আৰু দৰজা খুলি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতক কি কৰিছিলোঁ, কটা এটাত যে চাউলৰ সুত তেওঁলোকক সিহঁতক কি কৰিছিলোঁ, চাউলৰ সুত দি पानी दिसिलू। वे दिनों सुएदाना जैसे पिंजरा से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज की टुकड़ी को अपने नए बছৰে का गौरव प्रदान किया। যে সিহঁতে কি কৰিছিল, যে সিহঁতে তাতে দানা পানী খাইছিল, পিঞ্জৰাৰ পৰা ওলাই দানা পানী খাইছিল আৰু কি কৰিছিল, সিহঁতে কেতিয়াবা লুকা চুৰি খেলিছিল,
যে কেতিয়াবা মেজৰ তলত থাকিছিল, কেতিয়াবা আলমাৰীৰ পিছত থাকিছিল। এনেদৰে সিহঁতে কি কৰিছিল, লুকাচুৰি খেলিছিল। তাৰোপৰি সিহঁতে কি কৰিছিল, যে বেয়া কাগজৰ টুকুৰাবিলাক সিহঁতে নি তাতে কি কৰিছিল, বাঁহ সাজিছিল। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तावास करने और रात में रद्दी की टुकड़ी में प्रकट होते रहे। 2-4 दिन এইদৰে সিহঁতে মনে মনে উদ্যত থাকিছিল আৰু ৰাতি হ'লে সিহঁতে সেই বেয়া কাগজৰ টুকুৰাৰ মাজত থাকিছিল। फिर अस्तबत हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। যে এইদৰে সিহঁতে কি কৰিছিল, কেতিয়াবা মোৰ মেজৰ ওপৰত, কেতিয়াবা মানে কুৰ্চীৰ ওপৰত, কুৰ্চী মানে চকীৰ ওপৰত, আৰু কেতিয়াবা মোৰ মূৰৰ ওপৰত সিহঁতে পৰিছিল। খিৰিকীও মেটো জালি লগি থি, খিৰিকীটো জালি লগোৱা হৈছিল। पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखा पड़ता था, किंतु दरजाखान मैं सदाय बंद करी थैছিলোঁ। चूल्हा रहने पर चित्रा अर्थात मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। যে দৰজাখন মই সদায় বন্ধ কৰি থৈছিলোঁ আৰু খোলা থাকিলে অৰ্থাৎ মোৰ মেকুৰী অৰ্থাৎ চিত্ৰা মেকুৰীটোৰ নাম। এই নৱাগত মানে পক্ষী দুটাক সি কি কৰিব পালে, সিহঁতৰ অৱস্থা কি কৰিব মই তাক ভালদৰে জানিছিলোঁ। वैसे ही वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करता, সিহঁতৰ ওপৰত যিদৰে আক্ৰমণ কৰিব হয়তো মেকুৰীটোৱে মানে কি কৰিব, যে ময়ূৰৰ পোৱালি দুটাৰ ওপৰত সেইদৰে আক্ৰমণ কৰিব, কিন্তু সি নিগনিকে তেনেধৰণে আক্ৰমণ নকৰে। परंतु यहाँ तो दो स्वार्थवश परिस्थिति पक्षियों की अधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उनके लिए दरवाजा बंद रखे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। যে সিহঁতে কি কৰিছিল, সিহঁতে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰিছিল আৰু সিহঁতে সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিছিল, আৰু সিহঁতে কেতিয়াবা কি কৰিছিল, বন্ধ দৰজাত দুয়ো কি কৰিছিল, ৰখিছিল আৰু কি কৰিছিল, আৰু সিহঁতে মোৰ মেজখনকে নিজৰ সিংহাসন বনাই লৈছিল। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए अदज्य ही कही যায়। যে এইবিলাক পৰিস্থিতি দেখি যে মাৰ্জাৰী মানে মেকুৰী, যে সেই মেকুৰীটোৰ কি লাগিছিল, অসহ্য লাগিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ।